Okay. Very good morning. Today we'll discuss about abrasive water jet machining. In the previous class, we have discussed about water jet machining process. है ना? प्रीवियसली हम लोग वाटर जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस की. So today we will discuss about another non-traditional machining or non-conventional machining process, that is abrasive water jet machining process. Okay. So from the terminology or the machining process, I think we are well that this machining process is similar to the water jet machining process, but here some abrasive particles are used with the water jet. So in the water jet machining, in case of water jet machining, only water is used at a very high pressure and high velocity. But in abrasive jet machining process, uh, along with water jet, some abrasive particles are used for cutting purpose. Okay. So this abrasive jet, abrasive water jet machining process, this is also a non-traditional or non-conventional machining process. Non-traditional or non-conventional means uh, this machining process, in this machining process, there is no direct contact between the tool with the workpiece. Okay. So there is means, another cutting media, that is uh, water, water at a very high pressure and the high velocity, and along with the water, some abrasive particles are mixed. Okay. This belongs to the mechanical group of non-conventional machine process like ultrasonic machining process or abrasive machining process. These are similar types of machining process. So in this process, like a water jet machining process, we have some abrasive particles are used. Okay. And these abrasive particles mm, flow along with the water at very high pressure and high velocity and strike on the workpiece material, and material from the workpiece is removed by erosion mechanism. Okay. So the principle of this abrasive water jet machining process is here a fine abrasive particles are used, and these fine abrasive particles uh, flow at a very high pressure, around to 1000 MPa or 1500 to 4000 Newton per centimeter square, and very high velocity. High velocity means is it twice the speed of uh, sound. Okay, very high velocity of water jet, and this water jet along with abrasive particles or bombarded strike on the workpiece material, and the material is removed by erosion mechanism. Okay. This high velocity water jet is directed at the target in such a way that the velocity is reduced to zero on striking the workpiece. Okay, means the water jet and abrasive particles at very high velocity फ्लो हो रही है, वो स्ट्राइक करने के बाद मीन्स वर्कपीस में स्ट्राइक करने के बाद द वेलोसिटी ऑफ दिस वाटर जेट reduces to zero. That means फ्लो हो रही है एट अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी है. ओके, काइनेटिक एनर्जी means potential energy is converted to kinetic energy, and this kinetic energy
for striking on the warp, so the warp is strike kariye, then the kinetic energy converted to a very high pressure energy. And this high pressure energy, uh, this high pressure energy, if this high pressure energy is more than the strength of the material, का जो strength है उससे अगर ज़्यादा होगी हाई प्रेशर ऑफ वाटर के, then the erosion mechanism occurs, and by erosion mechanism the material is removed from the surface, and in this way the material can part by aggressive water jet motion. Okay, clear? Hello. Yes, sir. In others, Said, Said, clear? शायद योर तुम्हारा जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन खराब है। मुझे तो नहीं लग रहा है माइक्रोफोन खराब है। तुम्हें हेडफोन यूज करना जरूरत नहीं है। इस जो माइक्रोफोन का ऑप्शन है वो ऑन करके एक बार कह दो तो जो तुम्हारा माइक्रोफोन खराब है। हेडफोन यूज करना जरूरत नहीं है। मोबाइल में तो ऐसे तो जो ये रिसीवर है उसमें ही तो काम करते हैं ना माइक्रोफोन। तुम्हारा फोन में कॉल नहीं होता है शायद। हेलो। सर उसने यस सर। मैसेज किया है। जी सर। एक मिनट। माइक्रो माइक्रोफोन तुम्हारे फोन में, मोबाइल में फोन होता है कि नहीं? कॉल होता है, ऐसे कॉल होता है ना। तो कॉल जो होता है तो माइक्रोफोन रिसीवर जो है वही तो रिसीव करेंगे ना। हेडफोन तो यूज करना क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लग रहा है ये तुम बहाना बना रहे हो। देखो जो भी है तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। तो आंसर सही नहीं देते हो। मैंने तो कॉपी चेक किया लाइन बाई लाइन, तो आंसर तुम्हारा सही नहीं है। बाकी सबका लगभग सही है, अपार्ट फ्रॉम राहुल एंड सुभाष। राहुल और सुभाष को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये हर क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर भी ऐसे एग्जाम नहीं। एग्जाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। कॉल तो होता है ना। कॉल होता है मीन तो जो रिसीवर है, माइक्रोफोन रिसीवर है, वो तो काम कर रही है ना। एक काम करो तुम, तुम्हारा जो माइक्रोफोन है ऑन करो। एक बार ऑन करो। ऑन करके हेलो कह दो, आ रहा है कि नहीं। अरे तुम माइक्रोफोन तो ऑन करो एक बार। ऑन करना आता नहीं है। हेलो कहते हो अभी हेडफोन छोड़ के। बिना हेडफोन में हेलो करने को नहीं आ रहा है। पता नहीं। ठीक है, जो भी है, अगर कोई नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कहना। और मैं तो आता है मैसेज चेक करना भी मुश्किल है। ओके। ओके, क्लियर। आयुष, आयुष का भी, आयुष तो अभी यस हरिद्वार सर। में है। जी सर। हरिद्वार हरिद्वार से वापस आ गया। नहीं सर, मैं यहीं पे दे रहा हूँ क्लास। ओके, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहना।
क्योंकि किसी ने ड्यूरिंग एग्जाम डायरेक्ट टॉपिक कर देते हो तुम, ठीक है प्रियांश? Yes, sir. Is it clear or not? Yes, Are sir. you Clear. understanding? Yes, Okay, sir. so but during exam you are copying directly. अगर अगर क्लियर है तो ड्यूरिंग एग्जाम वी हैव टू राइट बाय योर ओन वर्ड, है ना? Yes, sir. ओके, okay. So this is the working principle of what abrasive water jet making process. So what is the mechanism? So mechanism, what is the mechanism? The mechanism is nothing but a erosive by erosion mechanism. Erosion, how the erosion mechanism happen? Erosion mechanism happen by due to very high velocity and high pressure of water jet and along along with the mixture of abrasive particles. And due to this very high pressure and velocity, the potential energy of mixture of water jet and abrasive particles converted to kinetic energy. And when this kinetic energy is so bombard on the workpiece material, this workpiece material is strike करेंगे, this kinetic energy converted to pressure energy. ज़्यादा pressure use create हो गया on the workpiece. And जैसे और ज़्यादा pressure ये होगी, this pressure energy the work material is removed by erosive mechanism. Okay. So this energy of the water jet and abrasive particle, mixture of water jet and abrasive particle is around 10 to the power 10 watt per millimeter second. This is a so high energy. Okay, and this striking kinetic energy converted to pressure energy, and material is removed from the workpiece by erosion mechanism. Erosion mechanism means जैसे ब्रश पार्टिकल and the water are put the strike करेंगे then compressive force apply होगी on the workpiece material. तो compressive force कैसे होता है होगी? by the abrasive particle, जो abrasive particle strike कर रही है वो compressive force strike करेगी and due to this compressive failure होगी and the material will be removed from the workpiece. Okay, means अगर जो प्रेशर और फोर्स प्रेशर और हाई प्रेशर कंप्रेसिव प्रेशर जो अप्लाई हो रही है, अगर दिस कंप्रेसिव प्रेशर इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है सरफेस का जो स्ट्रेंथ उससे अगर ज़्यादा होगी देन एरोशन होगी एंड द मटेरियल विल रिमूव एंड मटेरियल रिमूव होगी मीन्स मटेरियल काट होगी, मटेरियल विल काट मीन्स सरफेस विल ओके. And in case of ductile material, this erosion mechanism occurs by the shearing action. Okay. So this is the machine setup. So different main components of abrasive water jet machining, like this is the controller. Controller is this one is a controller to control the different process parameter. Process parameter means like a flow rate of water jet, pressure, okay, everything you can control by this controller. So this is and this is the nozzle. So from this nozzle, the water jet and the abrasive particle, means mixture of water jet and the abrasive particles जो नोजल है नोजल से बाहर आएगी एंड इसमें जो बेड है यहाँ दिस इज द टेबल एंड the office material hold on this table. Okay.
इसमें पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम टू पंप द वाटर फ्रॉम द रिजर्वर. Okay, abrasive delivery system. So from here the abrasive particle will feed. Actually the abrasive particle mix with the water at the nozzle. ठीक है, नोजल में और मिक्सिंग करने के लिए एक मैकेनिज्म है, वह मिक्सिंग होती है. ठीक है. And this one is the catch tank. Catch tank means here the water and a mixture of water and abrasive particle flow. So after cutting this water and abrasive particle have to be stored. So this catch tank is used to store this water and abrasive particle, and this is also used to reduce the noise. Okay, vibration. So this is our water jet machine setup in laboratory. Okay, so this nozzle can be traveled by manually and as well as by automation also. So main component, one of the main components is a pump. Also means the components in abrasive jet machining and the water jet machining process are same. Means, these two machining processes are same. Only the difference is that in abrasive water jet machining, abrasive particles are mixed with the water. Okay, clear. So the function of pump in abrasive water jet machining is also same. Means abrasive वाटर जेट मशीनिंग में जो पंप का जो फंक्शन था, इसमें भी पंप का फंक्शन सेम है. ओके, सिमिलर फंक्शन. एंड so the function of pump is the water is pumped. Means uh, the water is pumped from the reservoir से water स्टोर किया जाता है, and this water pumped through this pumping system, and a sufficiently high pressure is achieved through this through the intensifier technology. Okay, एक इंटेंसिफायर है. मैं वाटर जेट मशीन के टाइम में बताया था. This one is the intensifier. Okay, so this is the fluid means reservoir of water. From this reservoir of water is pumped to this intensifier through pumping system, and in this intensifier here the uh, pressure of the water has increased. Okay, by this intensifier technology. Okay, in the previous class I have told how the pressure increased by this intensifier technology. इसमें piston रहते हैं. So to support this is the intensifier. इसमें piston रहती है. Okay. So when this piston is moved in this direction, then the water is pumped and enter into this intensifier, and when this piston is moved in this direction, then this fluid means water will get pressurized very high pressure. Okay, and then this high pressurized water flows through a accumulator. Yes. Okay. And function of accumulator is what? मैंने बताया था. accumulator का फंक्शन क्या है? सर उसको जो मटेरियल है उसको मतलब जमा करके रखना ताकि आगे सेंड करने के लिए. मटेरियल को जमा करने के रखना में सर यहाँ पे ये जो मटेरियल मिक्स होके आता है वाटर के साथ, नहीं हो तो नहीं, ये मटेरियल यहाँ पे वाटर के साथ मटेरियल कहाँ मिक्स हो रही है? ये तो वाटर टैंक पे और वाटर है. वाटर पर
वाटर के अगर पंप वाटर को इंटेंसिफायर पर लाएंगे, इंटेंसिफायर है ये पंप जो है, जी। पंप इंटेंसिफायर पर लाएंगे वाटर को। एंड इंटेंसिफायर जो है, इंटेंसिफायर में क्या होगी, ये जो वाटर वो प्रेशर हाई प्रेशर होगी, हाई हाई प्रेशराइज प्रेशर होगा। क्रिएट करेंगे वहाँ वाटर को। जैसे ऐसे जो अगर जो टैंक से जो वाटर आ रही है उसमें तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा ना। अगर ओपन टैंक से कोई पानी आ रहा है तो थ्रू पाइपलाइन बाई पंप, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए इंटेंसिफायर रहता है, इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी यूज करके तो उस वाटर को हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वेरी हाई प्रेशर। ओके, एरिया में अबाउट 2000 बार, 2000 to 4000 बार। ओके, उस प्रेशराइज्ड वाटर को एक्यूमुलेटर थ्रू पास किया जाता है। क्यों एक्यूमुलेटर के थ्रू? एक्यूमुलेटर का फंक्शन क्या है मैंने बताया था तो वाटर जेट मशीन के टाइम। जो पिस्टन है, इंटेंसिफायर का मैकेनिज्म क्या है, इसमें एक पिस्टन पिस्टन रहता है। जैसे पिस्टन मूव होगी तो इंटेंसिफायर पर जो वाटर आ रही है उसको उसमें प्रसार क्रिएट हो। ठीक है, सपोज ये जो पिस्टन है अगर ऐसी डायरेक्शन पर मूव करेंगे देन जो वाटर वाटर आ रही है इस इंटेंसिफायर पर, ये वाटर प्रेशराइज्ड होगी एंड दिस प्रेशराइज्ड वाटर या हीट होगी एंड जो एक्यूमुलेटर है एक्यूमुलेटर ऊपर आएगी। ओके, नाउ जैसे जो पिस्टन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पर इसी डायरेक्शन पर मूव करेंगे देन इसमें जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, ठीक है, जो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था वाटर पर, ये तो पाइपलाइन ये थ्रू पाइपलाइन एक्यूमुलेटर पर आएगी, है ना। बट जैसे पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करेंगे तो क्या होगी इसमें, तो प्रेशर खत्म हो देयर इज जाएगा, ए, प्रेशर खत्म हो जाएगा हाँ फिर। प्रेशर रिड्यूस होने का चांसेस है ना, ड्रॉप। मीन्स प्रेशर डिक्रीज होने का चांसेस है। ओके, है ना। जी। तो यस सर। to maintain the constant pressure and velocity, this accumulator system is used. ओके, मीन्स जो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड प्रेशर क्रिएट किया हुआ वाटर पर उसी प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने उसी प्रेशर मेंटेन करने के लिए एंड जो वेलोसिटी पर वाटर फ्लो हो रही है उसी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए ये एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटर मीन्स थ्रू एक्यूमुलेटर पास किया जाता है। ओके, ओके सर। तो दिस इंटेंसिफायर का फंक्शन क्या है, इंटेंसिफायर का फंक्शन है टू इंक्रीज द प्रेशर, जो वाटर जो आ रही है वो वाटर को प्रेशर इंक्रीज करने के लिए इंटेंसिफायर यूज किया जाता है। ओके, देन जो वाटर देन दिस वाटर इज पास थ्रू ए nozzle. Okay, so दिस इज द नोजल। ओके, तो ये जो वाटर मिक्स हुआ है दिस वाटर, इसमें एक कंट्रोल वाल्व रहती है, मीन्स कितना फ्लो करूंगा कितना फ्लो रेट कंट्रोल करने के लिए। ओके, मीन्स टू कंट्रोल द फ्लो रेट एज ए वाल्व। ओके, एंड दिस प्रेशराइज्ड वाटर फ्लो थ्रू ए नोजल, ये नोजल से पास किया जाता है। ओके, तो जैसे नोजल से पास किया जाता है मीन्स वाटर फ्लो हो रही है, मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वाटर पास थ्रू दिस नोजल। ओके, एंड एब्रेसिव पार्टिकल कहाँ मिक्स होती है, ये जो नोजल है इसी नोजल पर एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स होती है। इसमें एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में जो नोजल यूज किया जाता है वो दिस नोजल इज डिफरेंट कंपेयर टू द सिंपल वाटर जेट मशीनिंग। सिंपल वाटर जेट मशीनिंग में ओनली वाटर ही पास किया जाता है थ्रू नोजल, बट एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में जो नोजल यूज किया जाता है उसमें देयर इज
facility for mixing the abrasive particles. ओके, एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सिंग करने के लिए वहाँ फैसिलिटी यूज किया जाता है. ओके, एंड this potential energy is converted to a kinetic energy, and and जो एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर जो मिक्सचर है, दिस mixture strike on the workpiece at a velocity, at a very high velocity, means more than the velocity of the sound, around 1000 meter per second. 1000 meter per second. Okay, per second में 1000 meter. So think how much velocity. Okay. So in pure water jet machining, so on the simple water jet machining में just tap water यूज किया जाता है, बट in case of abrasive water jet machining, abrasive particles mixed with the water. Okay, so abrasive particle means silicon oxide, glass beads, these are mixed with the uh, water. Okay, and इसमें in case of abrasive water jet machining, the velocity after means nozzle से जैसे नोजल से बाहर आ रही है एब्रेसिव जेट वाटर एंड एब्रेसिव पार्टिकल, जैसे वेलोसिटी अराउंड टू 800 मीटर पर सेकेंड. ओके, another main component is abrasive jet nozzle. So a this is the nozzle, a nozzle है जो पता है, ये नोजल से क्या होगी, जो एब्रेसिव वाटर वाटर है एंड एब्रेसिव पार्टिकल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एब्रेसिव पार्टिकल्स coming out from this nozzle at very high velocity and pressure. But in abrasive jet machining, the design of nozzle is different compared to the water jet machining. इसमें just यही difference है, वाटर जेट मशीनिंग एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का डिफरेंस है ये, जस्ट जो उसका नोजल की डिजाइन, इसमें क्या होती है, एक एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सिंग करने के लिए एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी यूज किया जाता है. ओके, वैसे वैसे जैसे दिस इज द पिक्चर ऑफ नोजल. तो इसी पाइप पर तो जैसे इनलेट वाटर, इसमें वाटर आ रही है, वाटर कहाँ से आ रही है, टू दिस एक्यूमुलेटर. ओके, एक्यूमुलेटर से पास होकर इसी पाइपलाइन बराबर तो ये वाल्व ये नोजल पर आ रही है. ओके, तो दिस इज इनलेट वाटर. ओके, अब एब्रेसिव वाटर जब मिक्सिंग है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर रहती है टू एड द एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ. ओके, तो यहाँ एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सिंग होगी. ओके, ये जो वाटर आ रही है इसके साथ ये एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ मिक्सिंग होगी. ओके, एंड मीन्स यहाँ एब्रेसिव पार्टिकल फिट किया जाता है, एंड ये जो ट्यूब है यहाँ पर एब्रेसिव पार्टिकल के साथ वाटर के साथ एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स होगी. ओके, एंड दिस इज द nose of the tip of the nozzle. Okay, so इसका जो diameter है उस diameter this diameter will affect the material removal rate. Okay, so after mixing the abrasive particles and water jet यहाँ से बाहर आएगी इसे. ओके, एंड वार्पिस रहेगी, वार्पिस के ऊपर स्ट्राइक करेगी. ओके, ओके, क्लियर. सो द नोजल का जो डिजाइन है, दिस डिजाइन ऑफ नोजल इज डिफरेंट कंपेयर टू द वाटर जेट मशीनिंग. क्लियर. हेलो, हेलो. ओके, Yes, sir.
The purpose of abrasive jet nozzle is to provide sufficient mixing of abrasive and water jet and to form the high velocity abrasive water jet combination. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया क्या the purpose है to mixing the abrasive particles with the water. Okay, and to form a high velocity abrasive water jet combination. Okay. तो जो डिफरेंस है मैंने बताया तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्योर वाटर जेट नोजल एंड द एब्रेसिव वाटर जेट नोजल। प्योर वाटर जेट नोजल में तो वो एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सिंग करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं रहता, बट एब्रेसिव वाटर जेट नोजल में एक एब्रेसिव पार्टिकल को मिक्सिंग करने के लिए प्रोविजन रहता है। ओके, एंड व्हाई नोजल इन नोजल एब्रेसिव पार्टिकल में water. Okay. So, the function of abrasive jet nozzle is to minimize the abrasive wear. To minimize the abrasive wear in the nozzle. In the nozzle, what happens? The abrasive particles mix the water jet and flow at a very high velocity. So high velocity में flow होगी means there is chances of getting wire out. Means nozzle wire out होने का chances है. Okay. So to avoid this wire out in the nozzle, uh, the nozzle is made by tungsten carbide or boron carbide material. Okay, नोजल जो मटेरियल से बनाया जाता है वो टंगस्टन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड का वायर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, वायर रेजिस्टेंस टंगस्टन कार्बाइड एंड बोरोन कार्बाइड मोर। ओके, क्यों रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जो एब्रेसिव पार्टिकल एंड वाटर फ्लो हो रही है थ्रू दिस नोजल एट वेरी हाई वेलोसिटी में फ्लो हो रही है, तो उसमें वायर आउट होने का चांसेस है। ठीक है, इसलिए टंगस्टन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड से मटेरियल से बनाया जाता है। ओके, अंदर जो एब्रेसिव वाटर का एब्रेसिव जो नोजल है, टू टाइप्स नोजल रहते हैं। तो वन है सिंगल जेट साइड फीड नोजल एंड अनदर इज मल्टी जेट nozzle. तो सिंगल साइड फीड नोजल मीन्स इसमें जो वाटर पास किया जाता है, तो वाटर इज पासिंग थ्रू दिस मिडिल। ओके, इसमें मिडिल से वाटर पास किया जाता है। ओके, मिडिल ट्यूब एंड टू दिस साइड। ओके, इस साइड से एब्रेसिव पार्टिकल ऐसे मिक्स किया जाता है। ये जो है ये एब्रेसिव पार्टिकल्स है। ओके, एब्रेसिव पार्टिकल साइड से फीड किया जाता है एंड वाटर जो है वाटर मिडिल से पास किया जाता है। ओके, एंड a mixing tube रहता है यहाँ, mixing tube in this mixing tube water abrasive particles and water mix होता है। ओके, और मल्टीपल जेट में क्या हो रही है? मल्टीपल जेट में वाटर जो पास होगी इस साइड से होगी, इसे वाटर पास हो रही है। ओके, वाटर ऐसे आ रही है साइड से, ऐसे साइड से वाटर आएगी। ओके, एंड एब्रेसिव पार्टिकल से मिडिल से पास किया जाता है इसे एब्रेसिव पार्टिकल। तो ये मल्टीपल जो जेट है इसमें जो मिक्सिंग होगी, ये मिक्सिंग वाटर के साथ एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सिंग होने का प्रोपरली मिक्सिंग होने का चांसेस यहाँ ज़्यादा है ना? क्योंकि इसमें एब्रेसिव पार्टिकल वन साइड से फीड किया जाता है एंड इसमें एब्रेसिव पार्टिकल को जो फीड किया जाता है मिडिल से फीड किया जाता है। ओके, ओके सर। ओके, तो जो सिंगल जेट साइड फीड नोजल है इसमें दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमल मिक्सिंग एफिशिएंसी। ओके, तो दोस्तों
This single jet side feed nozzle does not provide optical mixing efficiency. Okay, and you will experience a rapid wear of the exit section. जो बाहर आने का जो सेक्शन है यहाँ इसमें वायर आउट और ज़्यादा वायर आउट होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें एब्रेसिव पार्टिकल एक साइड से पास किया जाता है एंड इसी साइड पर वायर आउट होने का ज़्यादा चांसेस होगी, है ना। एंड इसमें जो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी, मीन प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं होगी, में प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि वन साइड से पास किया जाता है। एंड मल्टी जेट जो है इसमें मिडिल से पास किया जाता है, सो यार द मिक्सिंग एफिशिएंसी विल बी मोर। ओके, so which one is the better? Is multiple jet nozzle system, है ना। क्लियर? Yes, sir. Now KCR this is also a main component. KCR means another component in abrasive आटा जेट मशीनिंग। केचर का फंक्शन क्या है? तो दिस नोजल, ये नोजल है। ओके, नोजल से एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर वाटर मिक्सिंग आ रही है एंड जो है दिस इज वर्कपीस। ओके, वर्कपीस मीन मटेरियल जिसको मैशिंग करनी है। तो मैशिंग करने के बाद क्या होगी? सपोज ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग करने के बाद जो एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर का मिक्सचर है वो नीचे ऐसे आएगी ना, तो इसको स्टोर करनी है। ओके, तो स्टोर करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है दिस इज कॉल्ड द कैचर। ओके, like a water basin is a catcher on catcher type of catcher. Okay, so different type of catcher is there like water basin, ceramic ball, जैसे ceramic ball भी यूज किया जाता है, कैचर प्लेट्स। ओके, ऐसे कैचर प्लेट भी यूज किया जाता है। ओके, so is the function of कैचर is to just store the uh, this water and abrasive particle mixture, and this also used for uh, reduce the noise और वाइब्रेशन। हाई स्पीड में फ्लो हो रही है ना, स्ट्राइक करने के बाद ये जो बाहर आएगी तो इसमें नॉइज जो होने का चांसेस है, तो टू रिड्यूस द नॉइज ऑल्सो। नाउ द प्रोसेस पैरामीटर्स मीन्स कुछ पैरामीटर है जो दिस पैरामीटर विल अफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। ओके, लाइक ए वाटर जेट मशीनिंग जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, वाटर जेट मशीनिंग दे आर ऑल्सो सम process parameter, so process parameter affect the water jet machining process. Similarly, in abrasive water jet machining, there is also some process parameter. Those process parameters also affect the performance of abrasive water jet machining. ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस पैरामीटर हो सकती है? Anyone? हेलो, Hello. Yes, sir. इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग में भी प्रोसेस पैरामीटर है, जो प्रोसेस पैरामीटर will affect on the performance of abrasive water jet machining, है ना। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, इन वाटर जेट मशीनिंग दे आर ऑल्सो सम प्रोसेस पैरामीटर। those process parameter affect the वाटर जेट मशीनिंग। तो वाटर जेट मशीनिंग जो टाइम मैंने बताया था ना, तो जो प्रोसेस पैरामीटर है, तो प्रोसेस पैरामीटर वाटर जेट मशीनिंग का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो सिमिलरली एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में भी कुछ प्रोसेस पैरामीटर है, जो प्रोसेस पैरामीटर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। परफॉर्मेंस ऑफ एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में क्या परफॉर्मेंस क्या क्या होती है? एक मटेरियल रिमूवल रेट,
क्वालिटी, मशीनिंग क्वालिटी, है ना, मटेरियल रिमूवल रेट कितनी हो रही है और मशीनिंग क्वालिटी कितनी है, यही परफॉर्मेंस है। तो प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है सम? हेलो, हेलो। यस सर। सुन रहे हो कि नहीं? हेलो। हाँ हेलो, तो आवाज आ रही कि नहीं मेरा? यस सर, आ रही। तो प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था क्या सर? ड्यूरिंग। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरा? कट रही है सर आवाज। मैं कह रहा हूँ प्रोसेस पैरामीटर जो है और एब्रेसिव वाटर जेट मशीन में प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है, ये मैंने बताया था वाटर जेट मशीन के टाइम, मैंने बताया था डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर है। सिमिलरली एब्रेसिव वाटर जेट मशीन में कुछ प्रोसेस पैरामीटर है जो प्रोसेस को मीन्स एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग को अफेक्ट करेंगे। वाटर जेट मीन्स उसका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। परफॉर्मेंस मीन्स मटेरियल रिमूवल रेट, मशीनिंग क्वालिटी, ठीक है, इसको अफेक्ट करेंगे। हमें हेलो, हाँ शायद कुछ कहना है शायद, समीर, आवाज नहीं आ रही? हेलो, ईशान, ईशान, यस सर। ये आवाज नहीं आ रही मेरा? आवाज आ रही है सर, कट कट से क्या आ रही है? काट काट के आ रही है? यस सर। कोई कैसे तुम सुन पा रहे हो, काट काट के आ रही है? क्या सर? हेलो। एक मिनट, एक मिनट please। हेलो, ये तो क्लियर आवाज आ रही है। मेरा मोबाइल में तो क्लियर आवाज आ रही है। हम्म, तो हेलो। हाँ, मेरा मेरा मोबाइल में तो आवाज साउंड क्लियर आ रही है। पता नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है इसमें? पिछले क्लास में थे तुम, यस सर। तो ध्यान नहीं दिया था, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, यस सर किया था। तो ध्यान नहीं दिया। मिशन क्या लगता है तुम लोग को, जो ऐसे लगते है जो ध्यान देना जरूरत नहीं है? क्या सर? तुम लोग को ऐसा लगता है क्या जो क्लास में ध्यान देना जरूरत नहीं है? नहीं सर। तो मैंने एक्सप्लेन किया था जस्ट नेक्स्ट डे उनसे प्रीवियस से, खाली मैंने इसको एक्सप्लेन किया था प्रोसेस पैरामीटर। वाटर जेट मशीनिंग का जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वाटर जेट मशीनिंग में जो डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कल। यस सर। तो इसमें एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सेम ही है, इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स करते हैं, तो इसमें प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है, सेम ही होगी ना?
वाटर जेट मशीन में जो जो है उसमें और दो एक एक्स्ट्रा ऐड होगी, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल ऐड हो रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा? मैंने तो जस्ट खाली मैंने एक्सप्लेन किया आज, तो किसी ने कुछ आंसर नहीं दे पा रहे। सर अभी ये पढ़ा नहीं है। पढ़ना की क्या जरूरत है? कल में इतना ये से एक्सप्लेन किया मैंने, ये भी समझ जैसे क्लियरली समझ में आए, तो इसलिए मैंने एक एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था। जो ऐसे पाइप से वाटर लेकर एक वाल पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो कैसे उसका वाल पर जो एरोड हो रही है उसका कैसे इफेक्ट होगा। जैसे अगर मैं नजदीक से करूंगा तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। जो पाइप से जो पानी आ रही है उसका स्पीड फ्लो रेट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एरोड होगा। मैंने तो सही से एक्सप्लेन किया था कि नहीं? ध्यान नहीं यस दिए सर। तुम? ध्यान नहीं दिए, सिंपल एक है। अच्छा तुम बताओ, ये जो ये आ रही है तो पाइप से जो पानी आ रही है, इसमें जो वाल पर ऐसे ये कर रहे हैं ना, ये एक तो वाल है मिट्टी का, और ब्रिज का एक वाल है जिसमें पानी दे रहे हैं। ठीक है। यस सर। तो जो मिट्टी और ब्रिज का जो ये है वो उसमें जो एरोड होने का जो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकती है? मीन्स अगर जो पानी आ रही है उसका ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगी, प्रेशर ज़्यादा होगी तो क्या होगी, जो पाइप का जो ये है ओपन है, मीन्स माउथ है, उसको अगर डायमीटर कम होगी तो क्या होगी, क्या होगी तुम बताओ? सिंपल है ना? यस सर, जो प्रेशर ज्यादा है तो सर यस सर। मिट्टी कट जाएगी। तो ये तो ज़्यादा डेप्थ होगी, ज़्यादा डेप्थ तो काट मिलेगी। ये सिंपल मैंने समझा था, मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल भी दिया था। हेलो। 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 सर की आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में। विशांत मेरी आवाज सुन रही है? हाँ आ रही है। सर की नहीं आ रही क्या? यस।